We put people in boxes based on their genitalia. Before a baby's even born, we ask whether it's a boy or a girl, as if it actually matters. As if you're going to be less excited about having a baby if it doesn't have the genitals you wanted. As if what's between somebody's legs tells you anything about that person. Are they kind, generous, funny, smart? Who do they want to be when they grow up? Genitals don't actually tell you anything, yet we define ourselves by them. In this society, we love putting people into boxes and labeling each other. It gives us a sense of belonging and teaches us kind of how to interact with one another. But there's one really big problem, and biological sex is not black or white. एक बार मेरे घर में खुशी के मौके पर कुछ लोग आए, डांस और बैक करते हुए। मैंने नोटिस किया कि उनमें मैस्कुलिन ट्रेट्स भी थे और फेमिनिन भी। उस दिन मैंने इंटरसेक्स लोगों के बारे में जाना। यानी कि वो लोग जिनके जेनिटल्स, क्रोमोसोम्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल फीमेल सेक्स बाइनरी में फिट नहीं होते। कुछ केसेस में इंटरसेक्स ट्रेट्स पैदा होते ही दिख जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में प्यूबर्टी आने तक उनका पता नहीं चलता। इनफैक्ट कभी-कभी क्रोमोसोमल और इंटरसेक्स वेरिएशंस का कोई भी बॉडीली प्रूफ नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 1.7% पॉपुलेशन इंटरसेक्स ट्रेट्स के साथ पैदा होती है? तो फिर हमें ऐसा क्यों सिखाया जाता है कि हर इंसान बायोलॉजिकली या तो मेल होता है या फीमेल? एक और फैक्ट सुनिए, इंटरसेक्स होना हमारे बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ा होता है और हमारे जेंडर आइडेंटिटी से अलग। ऐसा कहा जाता है कि जेंडर हमारे कानों के बीच होता है, ना कि टांगों के बीच। यानी कि जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है और जन्म पर जो लिंग हमें बताया जाता है सिर्फ उस तक सीमित नहीं होता। कुछ लोग टिपिकल मर्द या औरत के शरीर में पैदा होते हैं, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि वो गलत शरीर में पैदा हुए। कुछ लोगों की सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी की वजह से उनके एक्सपीरियंसेस हमसे बहुत अलग होते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज हम आए हैं La Red Comunitaria Trans में। बोगोता में बेस्ड एक ऐसा एनजीओ जो आर्ट, कल्चर और पॉलिटिकल एक्टिविज्म को यूज करता है ट्रांस और इंटरसेक्स लोगों के एम्पावरमेंट के लिए। Hola, mi nombre es Catalina Ángel, hago parte de la Fundación Red Comunitaria Trans, una organización que lleva 12 años trabajando desde la ciudad de Bogotá, una organización conformada por mujeres trans, trabajadoras sexuales, pues que se conforma y se crea con la intención de mitigar un poco las violencias en las que vivimos las personas trans, con el objetivo de empoderarnos también y de construir y transformar esas dinámicas y esos contextos en las vidas de nosotras, ¿no? Como salir de ese círculo de pobreza extrema en el que se mueve la población trans. Bueno, digamos que pues las dificultades son muchas, ¿no? Entendiendo que, digamos, como desde la jurisprudencia, desde lo jurídico, supuestamente, pues hay muchos derechos y muchos avances para los sectores poblacionales LGBT y más. Pero en la práctica, pues todavía hay muchas falencias, ¿no? Entonces, pues todavía hay falta de acceso a la salud, pues entendiendo como el acceso a un sistema digno, ¿no? Donde pues cada persona se sienta pues segura y digna dentro de una atención. Falta todavía espacios educativos que reconozcan las identidades trans, ¿no? Faltan todavía oportunidades laborales. Creo que no hay un reconocimiento de la identidad de las personas trans. Creo que por eso también es muy difícil acceder a estas cosas que socialmente pues son construidas desde lo binario, ¿no? Lo que pasa es que allá en el Amazonas hay, digamos, muchos cabildos que, digamos, un ejemplo, son muy rígidos y tienen otros como derechos, ¿me entiendes? Entonces no, digamos, tú naciste niño, es niño, tú naciste niña, es niña. Y la familia, hasta la misma familia lo discriminan en el colegio, en las calles, pues la gran mayoría por lo mismo, pues tratan como que de alejarse de la familia o emigran, pues para venir a la capital para sentirse, bueno, sentirse como feliz, sentirse acá pues como con más derecho, como más ayuda. Pues digamos lo más duro que yo
creo, bueno, que he escuchado es como que las mujeres trans solo servimos para ser prostitutas o ser peluqueras y que no tenemos ningún derecho más y que no servimos para nada más y que somos objetos sexuales. Entonces, digamos, fue algo que me quedó como sonando y aunque yo he ejercido el trabajo sexual, he tratado también de abarcar como otros puntos y otras formas también de vivir, porque yo soy de las que pienso que nosotras las mujeres trans tenemos que estar en cualquier tipo de, pues, de entidad o estar en cualquier tipo de espacio porque también somos sujetas de derecho. También es como romper ese paradigma y ese estereotipo que tiene la gente sobre nosotras las mujeres trans. कोलंबिया की तरह इंडिया में भी ट्रांस कम्युनिटी को सदियों से मार्जिनलाइज और डिस्क्रिमिनेट किया गया है, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। उनका बचपन मुश्किलों से भरा होता है क्योंकि उनके माँ बाप ऐसे बच्चों का होना अपनी बेइज्जती मानते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादातर बेदखल कर दिया जाता है, उन्हें असामान्य या विकृत माना जाता है, जिस वजह से वो शारीरिक और भावनात्मक हिंसा का शिकार बनते हैं। 2017 में इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा की गई एक रिसर्च के अनुसार केवल 6% ट्रांसजेंडर लोग फॉर्मली एम्प्लॉयड और 5% सेक्स वर्क या डोमेस्टिक लेबर में इन्वॉल्व पाए गए। 13% खाना बेचते थे और 11% बेगिंग में इन्वॉल्व थे। अगर हमारे देश के इतने बड़े हिस्से की ये हालत है, वो इतना सफर कर रहे हैं सिर्फ अपने पहचान की वजह से, तो उन्हें हम एम्पावर कैसे करें? नीचे कमेंट्स में हमें अपने सजेशंस दीजिए। हमारी अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इंडिया और कोलंबिया में ट्रांस और इंटरसेक्स लोगों के लिए क्या-क्या लीगल और सोशल इंटरवेंशंस दिए गए हैं। स्टे ट्यून्ड।